Good morning, everyone. We are discussing about the exercise number 3.7, just like optional, the last exercise of the linear pair equations. Now I am going to solve some problems of this exercise, and I hope that you will try to see and learn. Now question number 3. Come and try to see question number 3. A train covered certain distance at uniform speed. If the speed is 10 km faster, then it will take 2 hours less than scheduled time. And if it is slower to 10 km per hour, then it will take time 3 hours more than scheduled time. Then find the distance covered by the train. Question number 3. Students, we consider two quantities, just like let uniform speed of train equal to x km per hour and schedule time is y hours. Then distance is equal to speed into time. Therefore travel distance equal to x into y. Now the first condition of the question, ATQ1. If train is faster with 10 km per hour, then speed is x plus 10 and time is 2 hours less than scheduled time. Scheduled time is y, therefore y minus 2. Again multiply with speed and time equal to distance, and distance remain constant. Multiply it, xy minus 2x plus 10y minus 20. Now xy will be cancelled, equal to 0, minus 2, dividing equation, minus 2x minus 5y plus 10 equal to 0. Now the first equation, ATQ2. What is ATQ2? Train is slower than 10 km per hour, then it will take 3 hours more than scheduled time. Then you can say that x minus 10 and y plus 3 equal to xy, because distance भी always remain constant. भाई डिस्टेंस में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, हमने स्पीड को वेरिएट कराया तो टाइम वेरिएट हो गया. जैसे आप बाइक चलाते हो, आप हिंदी में समझो, आप बाइक चलाते हो तो आप अपने बाइक की स्पीड को बढ़ा दोगे तो वही डिस्टेंस कम टाइम में कवर होगी. आप स्पीड को कम कर दोगे तो वही डिस्टेंस अधिक टाइम में कवर होगी. ओके, तो सेम चीजें हैं. यहाँ पे स्पीड को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया तो टाइम कम हो गया, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस में तो कोई चेंज है नहीं. तो सेम चीजें यहाँ, स्पीड को कम किया गया तो टाइम बढ़ गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट. नाउ xy plus 3x minus 10y minus 30 equal to xy. xy will be cancelled. Now 3x minus 10y minus 30 equal to 0. Now second equation. After this, I will try to solve this equation by any algebraic method, as you can do. So come and try to solve it. First equation is x minus 5y 10 equal to 0. Second is 3x 10y minus 30 equal to 0. I am going to solve this equation by cross multiplication method. x upon minus 5 minus 10 10 and minus 30.
y upon 10 minus 30 and 1 3, 1 upon 1 3 minus 5 minus 10. So x upon 150 minus 100 equal to y upon 30 plus 30 equal to 1 upon minus 10 and plus 15. X upon 250 equal to y upon 60 equal to 1 upon 5. If x upon 250 equal to 1 upon 5, 5x equal to 250, now x is equal to 50. And if y by 60 equal to 1 upon 5, then 5 equal to 60, y equal to 60 by 5, 12. This means uniform speed of train equal to 50 km per hour and scheduled time is 12 hours. Therefore, travel distance, covered distance by train equal to x into y, that is 50 into 12, that is 600 km. This is your answer. Now come on, question number 4, the most important question. Question number 4. Question number 4 is, the students of a class are made to stand in row. Students का रो बनाना है, रो. If 3 students are extra in row, then there would be 1 row less. आप समझ सकते हो कि आप अगर स्टूडेंट्स की संख्या रो में बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ द रो घट जाएगा, और रो में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को घटा दोगे तो नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा. तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास यू हैव टू फाइंड. क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं फाइंड करना. सपोज दैट आई एम गोइंग टू काउंसिल यू ओरली. लेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू x and number of the student in every row equal to y. First consideration is let number of row equal to x and number of students in every row equal to y. Therefore, total number of students equal to x into y. Total number of the students x into y. Now ATQ1. According to the first condition of the question, if 3 students are extra in every row, let number of the row x and number of student y, then 1 row is less. That means x minus 1. नंबर ऑफ रो कितना हुआ? x minus 1. और एवरी रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने में? y plus 3. 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो कांस्टेंट है, केवल आपने उनके नंबर्स को इधर उधर किया है ना, तो टोटल नंबर तो कांस्टेंट है. अब फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई. Cancel of 3x minus y minus 3 equal to 0. Now first equation. ATQ2 क्या है? ATQ2 is if 3 students are less in row, 3 students, then 2 rows more. Number of row x plus 2 and y minus 3. That is xy.
xy minus 3x plus 2y minus 6 equal to xy. xy will be cancelled, minus 3x plus 2y. Again minus 3x minus 2y and plus 6 equal to 0. Now second equation. Solve equation number 1 and 2 by any algebraic method and try to find the value of x and y. When you multiply x and y, then you will get the total number of student of your class. जैसे आप x और y की वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x इंटू वाई. तो एक्स वाई की वैल्यू का जो मल्टीप्लाई है वही टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है. अब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये दोनों आप सॉल्व करिएगा किसी भी मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एल्यूमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एज यू लाइक यू कैन डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं सिंपल, एंड सॉल्व करने हैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड से. कोई कंडीशंस नहीं है. जैसे पहला ही क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू. पी एक्स plus qy equal to p minus q first, and qx minus py equal to p plus q. Second, when you want to solve this by elimination method, suppose that you are going to solve this equation by elimination method, then you have to multiply by p from equation number 1 and multiply by q equation number 2. Then p square x plus pqy equal to p square minus pq, and q square x minus pqy equal to pq plus q square. Equation number 3rd and equation number 4th. Adding them, when you add, this term is cancelled. Here is p square plus q square into x equal to pq, p square minus pq plus q square. pq will be cancelled. Now p square plus q square. Therefore x is equal to p square plus q square upon x is equal to 1. Now from equation number 1, p plus qy equal to p minus q. P will be cancelled. Y equal to minus q upon q. That is minus 1. Y equal to minus 1 and x is equal to plus 1. ये आपका रिजल्ट है. ये आपका रिजल्ट है. इसी तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं आपके, और खासकर अगर बड़े क्वेश्चन है, टेढ़े क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. आइए क्वेश्चन नंबर जरा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी. ABCD is a cyclic quadrilateral. Angle A equal to 4y plus 20. 4y plus 20 and angle C equal to minus 4x. Now आप concept of cyclic quadrilateral पर आइए. According to the concept of cyclic quadrilateral, sum of the opposite angles of cyclic quadrilateral be always 180 degree. So since ABCD is a cyclic quadrilateral,
quadrilateral. Therefore, angle of A plus angle of C equal to 180 degree. Now 4y plus 20 minus 4x equal to 180, or 4y minus 4x equal to 180 minus 20. Now 4y minus 4x is equal to 160, or y minus x is equal to 40. Now first equation. And angle of B equal to 3y minus 5. 3y minus 5. Angle of D equal to minus 7x plus 5. Similarly, angle of B plus angle of D is also equal to 180 degree. So 3y minus 5 plus minus 7x plus 5 equal to 180. Now this will be cancelled. 3y minus 7x equal to 180. Now second equation. Try to solve first and second. Just like multiply by 3 in equation number 1. Third equation, equation 1 multiply by 3. And 3y minus 7x equal to 180. That is second equation. Subtract them. This will be cancelled. 4x now x equal to minus 60 and x equal to 120, 64, 1 ja 4, 2, 25 ja. X equal to minus 15. Therefore, y is equal to 3y minus 3 into minus 15 equal to 120. 3y plus 45 equal to 120. 3y equal to 120 minus 45. 5, 11, 7, this, and y equal to 25. Therefore, angle of, now come on, to try find the angle of ABCD. Therefore, angle of A equal to 4y plus 20. So 4 into 25 plus 20, 25 chaukas 120, and now angle of C equal to minus 4 into minus 15, 60 degree, and angle of D is equal to minus 7 into minus 15 plus 5, 100 degree, and angle of B equal to 3y, y की वैल्यू आई है 25 and minus 5, 70 degree. This is the all angles of this cyclic quadrilateral. When you are adding angle A, angle B, angle C and angle D, you will get 360 degree according to the concept of quadrilateral. So, I stop here and tomorrow I will start a new chapter, quadratic equation. Okay, thank you.